Well, a new topic we are going to start from this module, and that is investment in equity and debt instruments. Well, the main domain in which we are, in fact, learning this accounting, that is the accounting for non-current assets. Okay. So in this domain, the item that we have now started to learn is, among the non-current assets, we will be talking about the investment in equity and debt instruments. So for that reason, let's look into the relationship that we are developing with this investment in equity and debt instruments. The relationship is that, okay, these are financial assets, and here we are, these are a branch of non-current assets. And we know very well that in the family of assets, we have current and non-current assets. So in a way, we are traveling from here to here and then here. Okay. So here we are. Okay. Well, so just see, we are making investment in equity instruments and we are making investment in debt instruments. So in a way, you being an accountant of an entity is making an investment in an other entity, and for the other entity, either you would be buying its equity shares or you would be buying its debt certificates. Okay, so this is what we are going to learn now. And the important thing over here is that once again we should revise the definition of financial assets. Okay, so financial assets, these are the assets which give rise to the financial liability or equity instruments at the same time, this is a contractual arrangement. If you do recall, this is what we learned when we were learning accounting for current assets. Okay, so क्या होता है, when you have made investment in debt or equity instrument of another entity, तो जो आप investment करते हैं, that becomes your asset, which is your financial asset. लेकिन at the same time वो दूसरी entity की या तो equity instrument बिके, वो आपको share issue कर रही है, that's why, और या फिर वो आपको debt certificates issue कर रही है दूसरी entity. तो these are the two reasons. Okay, और इसमें मेन चीज हम जहां जिस एरिया पर हैं, दैट इज कि ये नॉन करंट एसेट्स का एरिया मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम नॉन करंट एसेट्स की डोमेन में इन सारी लर्निंग्स को लेकर आ रहे हैं. ओके ओके, सो नेक्स्ट अब इसके अंदर देखते हैं कि इसे रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है जब हमने फाइनेंशियल एसेट्स को रिकॉग्नाइज करना. तो उसके बारे में ये कि इन्वेस्टमेंट इन डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे फाइनेंशियल एसेट हैं, और उनको हमने जब एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करना है, उसकी मेन पहचान ये होगी कि हम पार्टी बन गए हैं. ओके, हम पार्टी बन गए हैं उस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस के अंदर जो कि हमने उस इंस्ट्रूमेंट के लिए तय की हैं. Okay, we, the entity who is investing in another entity's debt or equity instruments, हम एक पार्टी हैं और वो अदर एंटिटी एक पार्टी. जब हम पार्टी बन गए, अब हम उस इन्वेस्टमेंट को अपनी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे. दिस इज द पॉइंट. वेल, सो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अगर हो तो अकाउंटिंग एंट्री रिकॉग्निशन के वक्त क्या है कि उसको शेयर्स इन X company, whatsoever the name of that company, आप उसके शेयर्स इन X company एक इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पे डेबिट कर देंगे, और whatever you are paying बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे. और अगर आपने जैसे बैंक जब लोन एडवांस करता है, supposedly you are the accountant of bank, and being
accountant of a bank which is a financial entity, आपका इंस्टीट्यूशन है, वो जब किसी को एडवांस कर रहा है लोन, तो वो लोन टू एक्स कंपनी डेबिट, और जो उसके अकाउंट में आप पैसे उसके अकाउंट्स में आप जब दे रहे हैं, आपके अकाउंट से कैश जा रहा है, बैंक जा रहा है, वो आप उसको एडवांस कर रहे हैं, वो आपका क्रेडिट। तो इन अ वे बैंक की अकाउंटिंग आप देख रहे हैं, तो आप एडवांस जो कर रहे हैं वो आपके लिए एसेट है, लोन टू एक्स कंपनी और एक्स वाई जी होमसोएवर वो आप डेबिट कर रहे हैं। वेल, इफ यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, तो वो जो अदर एंटिटी होगी दैट वुड बी इशूइंग यू लोन सर्टिफिकेट्स। ओके, तो आप लोन सर्टिफिकेट्स को एसेट के तौर पे डेबिट कर रहे हैं। ओके, और आप जो पेमेंट कर रहे हैं बैंक क्रेडिट कर रहे हैं। ऑलराइट, so these are the few accounting entries that in fact we pass when we recognize this investment in debt or equity instruments, okay, as an asset. And remember, we are talking about the domain of non-current assets being long-term investments. Thank you.